Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई के रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा अबाउट द कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्रीज। तो सर्वप्रथमे आमे जड़े फेमस जर्मन फिजिसिस्ट थिले हर्मन वेल से कहिथिले एक्चुअली सिमेट्री बा सामंजस्य एटा होची एज ए वाइड और एज ए नैरो as you may define its meaning is one idea by which man through ages has tried to comprehend and create order, beauty and perfection. से जहाँ भी हो सिमेट्री प्रिंसिपल जदि आमे देखिबा एक्चुअली एटा गाइड करे बहुत किछि तमरो जानिबा पई टुवर्ड्स द अननोन डोमेन्स एंड आल्सो ये हेल्प करे शॉर्टकट पाइबा पई तमरो जोटा कि डिजायर्ड रिजल्ट्स अछि ओके आ इनफैक्ट ए सिमेट्री प्रिंसिपल आहुरी मध्य हमकु प्रकृति को बुझिया को भी साहाय्य करे ओके अच्छा प्रकृति रे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन होची ताकू भी आमे एसोसिएट करि परिबा विथ दैट ऑफ सिमेट्री and all these interaction of particles are actually controlled by some absolute laws of conservation. Okay, so there are some conservation laws and symmetry principle which are valid for some of the interaction but not for other interaction. Okay, sabu prakar interaction pai eta valid nuho. So we shall study now that stronger is the interaction, the more symmetrical it will be. ओके जेते इंटरैक्शन टा स्ट्रॉन्गर हेबो सेते बेसी सिमेट्रिकल रहिबो एंड एट द सेम टाइम जदि इंटरैक्शन टा जेते वीकर हैला से हिसाब रे सिमेट्री कमी जिवो एंड एठी कंजर्वेशन लॉ रो कंट्रोल टा भी कम रहिबो ओके फॉर द केस ऑफ वीकर इंटरैक्शन ओके एबे आकु बढ़िबा देखो मोस्ट इंपोर्टेंट रेगुलरिटीज व्हिच आर फाउंड इन द पार्टिकल्स ऑफ एटम they control the structure of matter okay so तीनिटा common quantity जदि आमे देखिबा mass electric charge ଆଉ spin these three actually play a vital role in establishing the symmetry and conservation laws तो सर्वप्रथमे mass को आमे actually बुझिबा कोन it is nothing but the rest mass of the particle okay आ ए rest mass कहले आमे कोन बुझिबा एटा होची गोटे mass which is positioned in a frame of reference. The reference frame is connecting with the particle itself. Okay, अच्छा ये जो particle रो mass टाको आमे measure करी परिबा in terms of mass of the lightest particle which is nothing but the electron. Okay, and mass of a particle is also can be expressed in terms of energy units that is MeV mega electron volt. ओके आ आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन हिसाब रे आमे E इक्वल टू mc स्क्वायर हिसाब रे याकू परिप्रकाश करि परिबा सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज जदि देखिबा गोटे पार्टिकल रो आमे याकू न्यूमेरिकली जदि एक्सप्रेस करबा को चाहूछु ताले 0 +1 आ -1 वेयर 0 चार्ज डिनोट करछि नो चार्ज दैट मींस न्यूट्रल पार्टिकल +1 रिप्रेजेंट करछि a charge which is equal to 1 okay equal to that of your electron charge but positive sense रे ଆଉ -1 एठी represent करूची the charge which coincides with that of the electron charge किंतु negative sense रे okay ଆଉ 3 नंबर रे spin जदि देखुछु गोटे पार्टिकल रो ताले ये बुझाउची गोटे स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम को सेही पार्टिकल रो अबाउट एठी जदि ए एंगुलर मोमेंटम देखिबा एसोसिएटेड विथ द रोटेशन of the particle about its own axis okay so particle रो आमे जानि छु जे एंटी पार्टिकल भी अछि आ ए पार्टिकल आ एंटी पार्टिकल एक्चुअली
they have equal spins and masses, but difference ହେଲା ତାଙ୍କର charge ଟା ଓଲଟା ହେବ. Okay, they have opposite sign as far as their electric charge is concerned. Suppose for example ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋଟନ୍ ନେବା ତାହେଲେ ତାର ଚାର୍ଜ ହେଲା ପଜିଟିଭ, ଆଉ ପ୍ରୋଟନ୍ର ଆଣ୍ଟିପାର୍ଟିକଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଣ୍ଟି ପ୍ରୋଟନ୍, ତାର ଚାର୍ଜଟା ଆସିଗଲା ନେଗେଟିଭ. Thus the particles and antiparticles have opposite charges. Okay. ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା lambda 0 bar, which is nothing but the antiparticle of lambda hyperon, that is your lambda 0. Similarly ତମର ଯଦି positron ନେଲ or positive muon ନେଲ, negative pion ନେଲ, negative kaon ନେଲ, all these are antiparticles respectively of electron, negative muon, positive pion and positive kaon. Okay, so remember, whatever be the symmetry between the particle and antiparticle, किंतु फंडामेंटल डिफरेंस है कौन ना oppositely ସେମାନେ ଚାର୍ଜ ଥିବେ ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟିକଲ ଆଉ ଏଣ୍ଟି ପାର୍ଟିକଲ actually they are annihilated in merging so as to have many mesons or photons. ओके याको आम एग्जांपल बुझाक चेष्टा करिबा. सपोज आम नेला गोटे सिग्मा प्लस हाइपेरन. ओके, such that it is colliding with sigma minus hyperon. Obviously these two are particles and antiparticles. Okay, so এই जो collision द्वारा कौन हम ये दुईटा जाक पार्टिकल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जिवे. ओके, आ ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को आमे कहिबा एनिलेशन, किंतु एठिरु एज ए रिजल्ट आमे फोटोन किंबा मेजन्स पाई परिबा. देखो आमे किछिटा न्यूक्लियर रिएक्शन नीचु व्हिच आर शोइंग एनिलेशन प्रोसेस, जेमति कि इलेक्ट्रॉन प्लस पोजिट्रॉन एटा मिसी कि दुईटा फोटोन बाहरुची, किंबा प्रोटॉन प्लस एंटी प्रोटॉन आमे जदि करिबा ताले ता सहित एठी बाहरला आफ्टर एनिलेशन दुईटा तुमर तीनटा एक्चुअली पाए मेजन बाहर, गोटे पाए प्लस, गोटे पाए माइनस आ गोटे पाए जीरो. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल पायन, किंबा एई प्रोटॉन आ एंटी प्रोटॉन को आमे एई हिसाब रे भी करि परिबा दुईटा पॉजिटिव पायन आ दुईटा नेगेटिव पायन बाहरला. ओके, तेणु ये जो एंटी पार्टिकल रो कॉन्सेप्ट बहुत इंपोर्टेंस रखे एज फार एज द सिमेट्री इज कंसर्न. सो एक्जिस्टेंस ऑफ एंटी पार्टिकल अलोंग विथ द पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ दैट ऑफ योर सिमेट्री. आउ विदाउट एंटी पार्टिकल बहुत गुड़ाए थ्योरेटिकल इक्वेशन जोटा कि पार्टिकल को डिस्क्राइब करथला, these equation will become non invariant with respect to Lorentz transformation. ओके, सो निहाती भाव रे एंटी पार्टिकल रो प्रेजेंस दरकार, और इन अदर वर्ड्स एंटी पार्टिकल प्रेजेंट रहबा को पड़िबो इन एडिशन टू द पार्टिकल, so such that it is related to the invariance of laws of physics under the transformation of one inertial frame with respect to the other. ओके, आज यदि आमे क्लासिकल मेकानिक्स रे देखिबा, क्लासिकल मेकानिक्स रिवील करछि दैट इनवेरिएंस जो होची अंडर द सिमेट्री इट इज लीडिंग टू कंजर्वेशन लॉज. तो सपोज आमे गोटे एग्जांपल नेबा, आमे फॉर्मुलेट करबा रिलेशनशिप एज फॉलोज. देखो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, okay, it is a consequence of homogeneity of space, or rather a consequence of invariance of law of physics under translation in space. Okay, so momentum mane kono, it is the product of mass and velocity, so it is a physical quantity whose conservation is a consequence of the symmetry of physical laws. Second रे आमे भी कहि परिबा, जदि एबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को देखिबा ताले इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, और रादर इज ए रिजल्ट ऑफ इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स अंडर रोटेशन. आमे जानिचो एंगुलर मोमेंटम टा रोटेशन द्वारा एसोसिएटेड, so angular momentum is conserved as a result of symmetry of physical laws. A third case रे law of conservation of energy जदि देखुछु, it is a consequence of the homogeneity of time, or rather a consequence of the invariance of laws of physics under translation in time. Okay, our energy होची गोटे physical quantity which is conserved as a result of symmetry of physical laws. Okay, सो ये जो कंजर्वेशन लॉज गुड़ा आमे देखिबा, आकु भी डिटेल या विषय रे पढ़िबा.
The relationship of these conservation laws to the space-time symmetry confirms that passage of time or displacement in space cannot cause variation ହେଲା time किंबा displacement रो जदि भी passage होउची माने आकु जदि advance करूची तो भी एठी conservation law हिसाब रे variation को से किछि affect करू नहीं ओके सो एठी फिजिकल स्टेट जोटा रोची सिस्टम टा सेटा इनवेरिएंट रोची ओके सो दिस विल नीड that a system should be interacting with the other system okay and conservation laws are actually formulated just like your rules of prohibition जेमति कि आमे सिलेक्शन रूल विषय रे पढू जेतोले एटॉमिक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हेता है okay so the principle of conservation of energy prohibits the perpetual motion माने it is a motion that continues indefinitely এটা তুমি সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স যোଉଥିରେ କି କେଲଭିନ ପ୍ଲାଙ୍କ ଆଉ କ୍ଲସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଏଇ perpetual motion ବିଷୟରେ ପଢିଥିବ so in fact the symmetry which follows a measure of orderliness okay symmetry ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ particular order ରେ ସେ maintain ହେଇକି ରହିବ at all times and it will tend to reduce the number of possible version of prohibition ओके जो जो जगह भी प्रोहिबिशन देखौछि ताकू से कम करबा को चेष्टा करिवो ओके हेंस थ्रू कंजर्वेशन लॉज द सिमेट्री कवर्स ऑल द conceivable forms of the behavior of a system and at times it nearly predetermine a certain behavior of a system केमती से सिस्टम टा particularly behave करिवो ताकू भी ये पाखा पाखी assume करि परिवो So one of the most important property of these particles is that many of them are actually unstable. So जेमती आमे heavy nuclei कथा जदि भाबिबा ताहले heavy nuclei टा बहुत unstable थाए easily ये break करि जाए बा split हे जाए into two or more fragments जोटा कि fission fragments आमे कहिथाउ तो similarly in case of most of the particles they decay spontaneously without any induction okay so that as a result अलगा एबे नुआ पार्टिकल क्रिएट होती ओके हाउएवर जदि आमे केतरा पार्टिकल देखिबा लाइक योर फोटोन देन न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन एई भलिया पार्टिकल रे किंतु डीके प्रोसेस देखा जाय नाही बिकॉज दे आर वेरी मच स्टेबल ओके अच्छा आ गोटे जिंस सपोज आमे कंसीडर करिबा बीटा माइनस डीके सो एथिरे कोन हुए बीटा माइनस डीके रे गोटे न्यूट्रॉन डीके करे इनटू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओरिजिन किंतु आमे एमती भाबिबा जे ए न्यूट्रॉन रु एक्चुअली जो डीके करके तीनटा पार्टिकल बाहरला तो न्यूट्रॉन टा एक्चुअली इट composed of this proton electron and the neutrino of electron origin माने ए तीनी पार्टिकल रे तयारी जदि बोली भाबिबा ताहले सेटा एक्चुअली भूल हबो ओके सो इट मीन्स that before the decay or disintegration the neutrons are actually not constituted as a combination of these particles okay so decay जदि आमे देखुछु of a subatomic particle is by no means a decay in the literal sense ताले decay रो माने कोन here decay or disintegration means it is an act of transformation of the initial particle into a new particle जहाँ द्वारा एबे कोन हबो इनिशियल पार्टिकल टा एनिलेट हेकी नुआ पार्टिकल रो फॉर्मेशन हबो एंड मेनी पार्टिकल्स डिके इन डिफरेंट वेज ओके गोटे पार्टिकुलर वे नुहे बहुत गुडा वे रे बहुत गुडा पार्टिकल डिके करंती सपोज फॉर एग्जांपल आमे कंसीडर करबा द डिके ऑफ पाई प्लस मेजन सो एठी देखो पाई प्लस मेजन टा डिके करूची into a positive muon and a neutrino of mu origin किंबा डिके करि पारे into a your positron and a neutrino of electron origin. So out of the 5 subatomic particles which do not decay actually 3 of them are your photon एठी बही रे एक्चुअली फोटोन आ न्यूट्रिनो देथिला मु एठी ऐड करिछि आई डाउट एठी थर्ड पार्टिकल टा ग्लूऑन हबा कथा फिर भी जदि किछि एरर लागिला मते कमेंट सेक्शन रे तमे कहि परिबो सो एई तीनटा पार्टिकल दे मूव एक्चुअली विथ द स्पीड ऑफ light velocity of light which is 3 into 10 to the power 8 meter per second in any inertial frame of reference
other two particles ହେଲା electron and proton, they have actually infinite lifetimes. So এই ସବୁ particle जोटा decay କରୁନି, then obviously they are stable particles, and the stability of these particles is based on symmetry, which will be expressed in terms of conservation laws. ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ unstable particle କଥା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ unstable particle decay କରି ଯାଉଛି. Okay, the decay of unstable particles and annihilation in the collisions of particles with that of the antiparticles, these are actually examples of interconversion of particles, and these interconversion of particles made significant contribution to our understanding of your conservation laws and invariance principle. Okay. Thank you.